Need to answer the question on reservation at the jobs, reservation in education, reservation at what stage. I hope I'm making myself. Well, that brings us to a very, very important point. And that is the problem with democracy. Democracy में आदमी गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते हैं। आदमियों का अलग मामला होता है। अब एक लाइट बल्ब के बारे में इंजीनियर को पूछो, डॉक्टर को पूछो, जाहिल को पूछो, कोई फर्क नहीं है क्या? सब इक्वल हो सकते हैं क्या? I mean, there are so many serious issues. There are economic issues, there are social issues, there are political issues, there are reservation issues. I mean, are we going to treat everybody equally? So, a slightly related question is, everybody wants to do right here, right? All of you want to do the right thing. What is the right thing? Who decides what is right? Right? I think that's a fundamental question that we need to ask in a democracy, in the country. So if majority have become criminals and they say this is right, are we going to accept that? So he says, Aam Aadmi should participate. Well, Aam Aadmi participates and tells, oh, we want to get all the Muslims out of this country. Aam Aadmi opinion. Sabko chahiye. We don't want these fellows out. Remove them. क्या करेंगे डेमोक्रेसी में? आपका फ्रेमवर्क क्या है? What is right? How will you define what is right? Even considering that 100% participation is there. तो ये डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल फ्लॉ है, wherein तोले जाते हैं, क्वांटिटी होता है, क्वालिटी नहीं होता है. How are you going to face that question, and what is going to define what is right for you? तो डेमोक्रेसी का सिस्टम में एक ड्रग एडिक्ट को भी वोट है। ड्रग एडिक्ट कहेगा जो ड्रग्स मुझे फ्री में देता है मैं उसको वोट करता हूँ। डेमोक्रेसी में एक शराबी को भी वोट है, एक रेपिस्ट को भी वोट है, और वो कहेगा जो शराब मुझे फ्री में देता है मैं उसको वोट करता हूँ। ये डेमोक्रेसी के फ्लॉस है, ये सब हकीकत है डेमोक्रेसी। मगर आज दुनिया में जो प्रैक्टिकल जो सिस्टम चल लेकर है उसमें एक बेहतर तरीके का सिस्टम जो है जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल सिस्टम चल लेकर नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है उसके अलावा भी सिस्टम है, बट वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल नहीं है। आज दुनिया में वो इंप्लीमेंटेबल नहीं है। अभी 100 पीपल आर देयर। मैं इस एग्जाम्पल को बहुत बार बात कर चुका हूं। 51 पीपल डिसाइड टू वोट फॉर ए थीफ। दैट थीफ रूल्स द 49 गुड पीपल who don't vote for him. ये सब डेमोक्रेसी के फ्लॉस है। मगर एक हाइपोथेटिकल है, ऐसे ही हर बार होता है, ऐसा भी नहीं है। अच्छे लोग मिलकर खराब लोगों को पावर से हटाते हैं, ऐसा हो लेकर है। हमारे देश में भी उसका सैकड़ों मिसाल है। आम आदमी पार्टी का जीत भी उसका एक मिसाल है। हम लोग जो टैटी कॉर्पोरेटर्स अभी जीत कर है वो भी उसका जिंदा मिसाल है। जहां जाकर हम 100 रुपया भी नहीं दिए, लोग हजारों में आकर हमें वोट किए। जिस इलाके में हम बैठकर हैं वहीं भी आकर हमें क्यों में खड़कर वो वोट किए जिसको हम 100 रुपया भी नहीं दिए। ये आज का प्रैक्टिकल पॉसिबल है। मगर कौन तय करता है कि ये सही है कि ये गलत है? कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि ये सही है गलत है। मैं और आप नहीं तय करते हैं। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये सही है और ये गलत है। और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन डालकर है। उस लाइन जो है हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए वो अच्छा है और उसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान चलेगा। वो हर एक के लिए इस देश में अच्छी बात। तो आप दो मर्द यहाँ सामने बैठे हैं, वो आपस में शादी करना चाहते हैं और आपको कह रहे हैं कि आप शादी करा दो इनको, क्या करेंगे? दो बैठे शादी करना चाहते हैं आप इसमें, है ना? क्या करो? ये जो सवाल है आपका, नहीं मेजोरिटी चाह रही है उनकी शादी करा दो जी। और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या करें बताइए? नहीं राइट है ना मेजोरिटी?
डेमोक्रेसी में आप तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी हैं साहब, बताइए आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जब शादी करना चाहते हैं करा दो। जी, मैं तो नहीं करूंगा। प्लीज लेट मी कंप्लीट। ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया। ठीक है, मैं तो ऐसी शादी जो आप बोल रहे हैं वो पर्सनली मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, आप कोई लड़के से शादी नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। ठीक है, आई विल नॉट डू इट बिकॉज आई एम अगेंस्ट इट एट अ पर्सनल लेवल। बट हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो दोनों लोगों को करना है तो करने दो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर मैं तो नहीं करूंगा और मैं उसका एडवोकेसी भी नहीं करूंगा, मैं उसको रेकमेंड भी नहीं करूंगा। वो उतना दूर आप छोड़ो, मैं पर्सनल लेवल में वो दोनों की शादी का आप क्यों जाते हैं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको 5 लीटर भी शराब पीना है, आप पी लो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मगर मैं और आप तो नहीं पीते हैं। उसी देश में मैं और आप जी रहकर हैं। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको जिससे भी रिश्ता रखना है जाके रख लो, कोई रुकावट नहीं है, कंपेल करके आप नहीं करना, इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मगर मैं और आप तो नहीं कर रहे हैं, वही देश में मैं और आप अभी भी जी लेकर हैं। मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। have anything to add to that. Personally, I think if two individuals make a choice and want to marry for the same sex, I think it's perfectly okay. Personally, as long as it's consensual, as long as they take that decision, I think it's Let me ask you a slightly twisted question. What if it is brother and sister? Then what? Now, a slightly twisted question. It's a brother and sister and it's consensual and it's not zabardasti. Now what will you do? Challenge. Practical challenge. It's a challenge. It's come to court and you're the minister. I think it boils down to the question of what priorities of ideals you have. No, the Constitution and your... Yes, absolutely. There are several ideals, there are some that are conflicting. Now, it boils down to what is higher priority and what is lower priority. For me personally, and I'm not talking from the party, for me freedom is highest priority. Every individual being able to do what he wants to do within the constitution, within the boundaries of the law is top priority. So I would answer it like that. Okay. Yes, I'd like to add. See, Constitution of India is a book prepared by the human beings. Let's all agree to this fact. Intellectuals, but human beings. Human mind has got limitation. I make one idea, it may stand for 100 years. Next century, it may not grow. So, very sincerely, good people, they have started making Constitution. Now, there are certain things in personal life and personal, like how I should behave with my wife, what are my wife's rights on me, what is my mother's position in my life, father's position, sister's position, my neighbor. There are some ethics and mutual behavior and the mutual respect of the co-citizens, your neighbors. Certain things are not clearly mentioned in the Constitution. Wherever we don't have those ideas available in the Constitution, let us go one step ahead and refer to the religious books which have been revealed by God, which have given very clear indication as to how you should behave to keep yourself peaceful, in harmony with whichever community you are living. your religious book is different from my religious book. Correct, I agree with you. There can be, I follow. there can be, Your book or my book? there can be two, 3 different books. Let us say there are 5 books. Out of those 5 books, whichever book gives a better solution, which will solve this problem, which is not against the natural process, we should follow that. We should agree with some common points. You know? In other words, And this is definitely beyond human beings' reach to be every solution by human mind. It is only the